Bismillahirrahmanirrahim. I welcome you all to this video tutorial in which I will discuss the Pakistan, the Factories Act 1934. Before this, I have already recorded a separate video on the West Pakistan Shops and Establishment Ordinance 1969, as well on the Control of Narcotic Substance Act, the 1997. फिर जो है, as you know that the in the Control of Narcotic Substance Act, there are the 78 section, while in this Factories Act, there is it comprises of the 82 sections and the 8 chapters. And I have already studied and discussed the West Pakistan Shops and Establishment Ordinance 1969, that is comprises of the 34 sections, and there is also the rules on the name with the West Pakistan Shops and Establishment Rules, the 1969. So in this video, I will discuss and explain some main features of the Factories Act 1934. But before that, let's take the overview of this Factories Act 1934. So actually, this Factories Act 1934 is comprises of the 8 chapters, and so it comprises of the mainly the 7 chapters and the 82 sections. We will discuss individually one by one each chapters and their different sections and the provisions of the section, subsection, clause. But I will discuss all these in a very short way. So now, as there is chapter 1, so it is the preliminary, and it comprises from the section 1 to 9, while the chapter 2, that is the name is the inspecting staff. सो यहाँ पर जो है फिर सेक्शन 10 से सेक्शन 12 कंप्राइज है, जिसमें जो है इंस्पेक्टर है, पावर ऑफ इंस्पेक्टर है, सर्टिफाइंग सर्जन है जो कि एग्जामिनेशन करता है. इस तरह जो है चैप्टर 3 में जो है हेल्थ एंड सेफ्टी, इसमें जो अलाउ चैप्टर चीज़ है रिगार्डिंग दी हेल्थ एंड सेफ्टी विद इन दी फैक्ट्रीज. बट बिफोर दैट we will first of all discuss. So it comprises of the chapter 2 is from the section 13 to the section 33, and the 33 is further than 33A and to Q. But before that हम डिस्कस करेंगे कि ये फैक्ट्रीज एक्ट 1934 इसमें जो है इसका प्रियम्बल क्या है, स्पेशली ये जो है जो लेबर है इन द फैक्ट्री, इसके हवाले से और इसके जो डिफरेंट प्रोविजंस है रिगार्डिंग दी डेली एंड वीकली आवर्स. इसके अलावा जो है इंटरवल फॉर रेस्ट, इसके अलावा जो है जो डिफरेंट डिफिनीशन सेक्शन में, suppose the child and adolescent or the adult definition. So all these we will discuss in the definition section individually. Now let's proceed toward the that is the chapter 4. So chapter 4 is regarding the restriction of the working hour of adult, especially daily and weekly hours, and also the overtimes, the etc. Our notices etc. के हवाले से जो है या different जो registers and जो मेंटेन करने हैं विद इन द फैक्ट्रीज का जब इंस्पेक्टर विजिट करेगा, सो फिर वो जो है रजिस्टर्स और रिकॉर्ड्स है उसे एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशन उसकी करेगी. इसके अलावा जो है डबल एम्प्लॉयमेंट ये restricted और prohibited है, और so these all are included in the chapter 4, that is the restriction on working hour of adults. और फिर जो है chapter 4 that is regarding the holiday with phase, जिस तरह की इसमें है कि एनुअल हॉलीडेज है, दैट इज 14 एनुअल हॉलीडे, देन द कैजुअल एंड द सिक लीव्स, इसके जो पेमेंट एक एम्प्लॉय की बनती है. सो व्हाट शुड बी दी पॉलिसीज रिगार्डिंग दी पे during that holiday. So this is all regarding in the chapter 4, that is the holiday with pay. Then the chapter 5 is regarding the special provision mostly for the adolescents and the children's. इसमें जो है स्पेशली चाइल्ड और एडल्ट की चाइल्ड एंड एडोलेसेंट्स जो है उसकी जो टाइम लिमिट्स है, जिस तरह डेली एंड वीकली आवर्स है, सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस होनी चाहिए, तब जो है एक चाइल्ड और एडोलेसेंट जो है फैक्ट्री में काम कर सकता है. इसके अलावा यहाँ पर भी जिस तरह एडल्ट के लिए एक रजिस्टर्स और नोटिस ऑफ वर्क तैयार करना था, यहाँ पर भी रजिस्टर्स एंड नोटिस ऑफ वर्क ये जो है मेंटेन करना पड़ता है.
इसके अलावा जो है सेक्शन चैप्टर 6 में जो है पेनल्टीज एंड प्रोसीजर्स है। इसमें जो है अलॉट ऑफ डिफरेंट चीज़ें अगर कोई इस फैक्ट्रीज एक्ट के अकॉर्डिंग जो प्रोविजन है वो फॉलो नहीं करता, सो फिर इसके लिए जो डिफरेंट पेनल्टीज है, बट मोस्टली मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में जो है इसमें फर्स्ट पेनल्टी इज द 500 रुपीज़ इन एवरी केस एक्सेप्ट अ फ्यू, जिसमें जो है एक सपोज की जिसमें जो है फॉर द डिफरेंट चीज़ें इसमें जो है फिर ये है कि पेनल्टी फॉर द पास सर्टिफिकेट इसके लिए फिर 20 रुपीज़ है, या जो है गार्डियन है या पेरेंट्स है, वो जो है डबल एम्प्लॉयमेंट की जो है परमिशन देता है चाइल्ड के, so इसके लिए जो फिर 20 रुपीज़ है। बाकी जो ऑल डिफरेंट प्रोविजन इसकी अगर कोई वायलेशन कर रहा है, स्पेशली from the section 60 to 60 class A to G. So for that, the fine is the 500 rupees in every cases. Then there is the chapter 7, that is the supplemental, and this is the last chapter that is also regarding the some notices display करनी होगी within the factories. इसके अलावा जो है different जो reviews है या even जो है protection to person, इसमें जो है हम अलॉट ऑफ जो डिफरेंट एक्ट और ऑर्डिनेंस में डिस्कस करते हैं। दैट इज इसमें जो है वो होता है इंडेमनिटी, सो यहाँ पर इंडेमनिटी की बजाय प्रोटेक्शन टू पर्सन एक्टिंग अंडर दिस एक्ट है। सो नाउ let's proceed toward the preamble of this act, the Factories Act 1934, and then individually we will discuss the different sections and their provisions. So now let's proceed toward the preamble of this act, कि ये एक्ट जो है किस पर्पस के लिए या कि एक्सप्रेशनली जो चीज़ है फॉर व्हाट पर्पस दिस एक्ट was amended. So now let's discuss that. So an act actually this act was to enact to consolidate and amend the laws regulating laborers and factories. So especially ये जो laborers हैं जो कि factories में काम करते हैं, ये उसके हवाले से है। डिफरेंट जो प्रोविजंस है रिगार्डिंग द लेबर्स जो कि एक फैक्ट्री में काम करते हैं, ये उसके हवाले से है। नाउ लेट्स प्रोसीड दैट व्हाट इज द फैक्ट्री। एक्चुअली जो कि द स्टार्ट टाइटल में ये दिया गया हुआ है कि फैक्ट्रीज एक्ट। So now let's proceed in the definition section. Because the definition section are arranged in the alphabetical order, so we will proceed toward the F's and study that what is actually the factory. Then what is the certain other definitions like the workers and the child, adolescents and adult, and then the different other different definitions. So here the factory is defined in the section 2, section 2 class J. It is defined that factory mean any premises including the precinct thereof whereon 10 or more workers are working, or we are working on any day of the preceding 12 months, and in any part of which manufacturing process is being carried on. सो सिंपल मीन ये है कि फैक्ट्री जो है एक प्रेमिसेस है जिसमें 10 या 10 से ज़्यादा वर्कर काम कर रहे हो ऑन द प्रोसीडिंग 12 मंथ्स, और वो चाहे पावर यूज़ कर रहे हो या वो पावर जो है वो यूज़ नहीं कर रहा हो, बट इन द फैक्ट्रीज इट नॉट इंक्लूड द माइंस, क्योंकि माइंस के लिए फिर एक सेपरेट एक्ट है दैट इज कॉल्ड द माइन एक्ट 1923। सो फैक्ट्री हम किस तरह डिफाइन करेंगे कि एक प्रेमिसेस जिसमें 10 या 10 से ज़्यादा वर्कर जो है कंटिन्यूसली फॉर द 12 मंथ काम कर रहे हैं, और वो किसी न किसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो है वो इन्वॉल्व हो, वो चाहे पावर यूज़ कर रहा हो या नहीं कर रहा हो। सो बट इट डजंट इंक्लूड द माइंस, because for mine there is a separate act, that is the Mines Act 1923. So this is the definition of the factory. Now let's proceed that what is actually a manufacturing process, and then we will discuss that what is power. So now let's proceed toward the M section, that what is actually the manufacturing process. So what is manufacturing process? That is defined in the class G, that mean any process जिसमें जो है आप मेकिंग, अल्टरिंग, ornamenting, repairing, finishing और faking कर रहे हो for what? For a view to its sale, use, transport or delivery or disposal. So that will be called is the manufacturing process. फिर manufacturing process में जो है आप अगर ऑयल पंप कर रहे हो या वाटर और सीवेज जो है उसे आप पंपिंग कर रहे हो,
So there is also the manufacturing process. इसके अलावा जो है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आप जो है कोई पावर है वो आप जनरेट कर रहे हो, ट्रांसमिट कर रहे हो, सो देट इज आल्सो दी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। सिंपल मीन ये है कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जिस तरह के नाम से जाहिर है कि एक चीज़ इसमें तैयार हो रही है। सो इट इंक्लूड द मेकिंग, अल्टरिंग, ऑर्नामेंटिंग, फेकिंग और रिपेयरिंग और फिनिशिंग of any substances for what purpose, to for sale, use, disposal, transport or delivery, जिसमें जो है पंपिंग ऑफ ऑयल एंड सीवेज, इसके अलावा जो है पावर जनरेट और फिर ट्रांसमिट करना जो है ये भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। नाउ लेट्स प्रोसीड दैट व्हाट इज बाय द वे पावर। दिस इज नॉट द पावर जिस तरह में हमारे जो ब्रेन में आता है कि पावर इज पावर। सो नाउ लेट्स प्रोसीड दैट व्हाट इज पावर। So it will be included in the P. So let me see. So here it is, the power definition. That is the power mean an electric energy or any other form of energy which is mechanically transmitted and is not generated by human or animal agencies. So simple mean ये है कि power जो है any electrical energy है जो कि आप जो कि ह्यूमन और एनिमल ने जनरेट नहीं की हो। इसके अलावा जो है जो जो भी जितनी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जीज हैं जो कि मैकेनिकली आप ट्रांसमिट कर रहे हो, सो दैट विल बी कॉल्ड एज दी पावर्स। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड डेफिनेशन ऑफ द वर्कर्स, क्योंकि हमने स्टार्ट में डिस्कस किया है कि ये प्रीएम्बल में कि दिस फैक्ट्रीज एक्ट 1934 एक्चुअली ये जो है जो लेबर्स हैं और वर्कर हैं जो कि फैक्ट्री में काम कर रहे हैं उसके हवाले से। सो व्हाट इज द वर्कर? सो वर्कर मीन अ पर्सन एम्प्लॉयड डायरेक्टली or through an agency whether for wages or not in any manufacturing process or in cleaning any parts of the machineries and premises used for a manufacturing process or in any other kinds of work whatsoever incidental to or connected। तो सिंपल मीन ये है कि वर्कर जो है कोई भी बंदा है जो कि आपने डायरेक्टली अपॉइंट किया हो या ऑन डेली वेजेस पर जो कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व ना हो लेकिन जो मशीनरी है जो कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए यूज हो रही है उसकी क्लीनिंग कर रहा हो। इसमें जो है आल्सो दी जो फैक्ट्री में या रूम में जो क्लरिकल स्टाफ है वो भी इंक्लूड नहीं है, बट डजंट इंक्लूड एनी पर्सन solely employed in clerical capacity in any rooms or place where no manufacturing process is being carried on। तो सिंपल मीन ये है कि वर्कर कोई भी बंदा है जो कि आपने एम्प्लॉय किया हो for what purpose, for cleaning the any parts of the machine that is involved in the manufacturing process। लेकिन वर्कर जो है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। इसके अलावा जो क्लरिकल स्टाफ्स हैं जो कि किसी भी रूम में काम कर रहा है या किसी प्लेस में काम कर रहा हो जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस नहीं हो रही, सो इसमें जो है दैट क्लरिकल स्टाफ जो है ये भी वर्कर में शामिल नहीं है। And then we will proceed now to the some other definitions. So let's start from the differences in the age. So adult mean a person जिसने जो है 17 साल कंप्लीट की हो। चाइल्ड जो है एक बंदा है जिसने 15 साल कंप्लीट नहीं की हो और 15 साल से बिलो इसकी एज हो, तो सो दैट विल बी चाइल्ड। और फिर एडोलेसेंट जो है ज़ाहिर है इन दोनों एजेस के जो है इन द बिटवीन ऑफ देम विल भी होगा। सो फिर जो है जिस वो बंदा जिसने जो है 15 साल कंप्लीट किए हो लेकिन 17 साल कंप्लीट नहीं किए हो, सो सिंपल मीन कि 15 और 17 के बीच जो बंदा होगा, सो दैट विल बी दी एडोलेसेंट। एंड देन व्हाट इज डे? सो डे मीन अ पीरियड ऑफ 24 आवर जो कि मिडनाइट पर स्टार्ट होता है। देन वीक्स मीन अ पीरियड ऑफ 7 डेज जो कि सैटरडे मिडनाइट से स्टार्ट होता है। देन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द पावर। वर्कर भी हमने डिस्कस किया कि कोई भी बंदा जो कि डायरेक्टली एम्प्लॉय किया गया हो वो किसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो है वो इन्वॉल्व नहीं हो लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की लिए जो मशीनरी यूज़ हो रही है उसकी सफाई कर रहा हो, लेकिन क्लरिकल स्टाफ भी इसमें इंक्लूड नहीं है। देन फैक्ट्री जिस तरह हमने डिस्कस किया कि एनी प्रेमिस जिसमें 10 या 10 से ज़्यादा वर्कर काम कर रहे हो फॉर द 12 कंसेक्यूटिव मंथ, इसमें लेकिन इसमें माइन नहीं है और फिर वो चाहे वो पावर यूज़ कर रहा हो या नहीं कर रहा हो लेकिन किसी न किसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कर रहा हो, मीन मेकिंग, अल्टरिंग, ऑर्नामेंटिंग, फेकिंग फॉर इट्स व्यू, फॉर सेल, यूज और डिस्पोजल कर रहा हो। मशीनरी जो है इन इंक्लूड ऑल प्लांट्स जहाँ पर पावर जनरेट, ट्रांसमिट और ट्रांसफॉर्म होती है और अप्लाई होती है। Then the occupier means any person who has ultimate controls over the affair of the factory, that will be the
ऑनर जो है दैट विल बी ऑक्यूपायर्स। एंड देन जिसमें फिर ये दिया गया है कि ऑक्यूपायर जो है या ऑनर जो है कोई भी बंदा हायर कर दें मैनेजिंग एजेंट, सो दैट विल बी आल्सो डीम एज द ऑक्यूपायर ऑफ द फैक्ट्री। सिंपल मीन ये है कि मैनेजर जो है that will be also considered as the occupiers or the owner of the factory, क्योंकि इसमें फिर फर्दर जो है डिफरेंट प्रोविजन है इसकी, अगर कोई वायलेशन कर रहा है तो फिर जो है फाइन स्पेशली मैनेजर्स पर लगता है। एंड देन एम इज जिसमें टू चीज़ है कि व्हाट इज रिले एंड व्हाट इज शिफ्ट। सो रिले इज एक्चुअली वेयर वर्क ऑफ सेम काइंड इज carried out by two or more set of worker on different periods of the day, कि एक डेज है और इसके डिफरेंट पीरियड्स में दो या दो से ज़्यादा वर्कर सेम टाइप्स ऑफ काम कर रहा हूँ, सो दैट विल बी कॉल्ड एज द रिले। एंड जिस पीरियड के लिए वो काम कर रहे हैं सो दैट विल बी कॉल्ड एज द शिफ्ट। जैसे हमें पता है कि ये कोई बंदा कहता है कि मेरा नाइट शिफ्ट है, कोई बंदा कह रहा है कि मेरा मॉर्निंग शिफ्ट है। सो जो जो टाइम पीरियड्स है जो कि डिफरेंट है, सपोज मॉर्निंग है एंड इवनिंग है, सो दैट इज कॉल्ड द शिफ्ट। वाइल जो कि जो बंदे उस शिफ्ट के अंदर same type of काम कर रहे हैं, so that will be called as the relay. Now let's proceed toward the section 3. This is the so this was all about the definition of this act. Now let's proceed toward the विकास डिफिनीशन जो है, अगर हम किसी एक को डिस्कस कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें जो चीज़ें यूज़ हो रही है, जिस तरह हमने स्टार्ट में डिस्कस किया कि व्हाट इज़ फैक्ट्री, देन व्हाट इज़ वर्कर, देन व्हाट इज़ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, और फिर जो है पावर क्या है। सो ये सारी चीज़ें अगर हमें आती है, सो देन we can probably study the any act, ordinance, or even rules or the bill. So now let's proceed toward the short title, extent, and commencement of this act. So this act may be called as the Factories Act 1934, and it will extend to the whole of the Pakistan. Means it will be applicable all over the Pakistan and any places of the Pakistan जहाँ पर जो है सबसे सेक्शन 2 के क्लास जे में जो फैक्ट्री की डेफिनेशन है, जहाँ पर फैक्ट्री होगी, so this will act will be applicable there, and it shall come from the first day of January 1925. This will be applicable. So and then we have discussed the section 2 that was regarding the definitions. So now let's proceed toward the section 3. So section 3 is regarding the reference to time of the day, कि days में जिस तरह हमने डिस्कस किया कि period of 12 hour is called the period of sorry 24 hour, that is called जो कि midnight simply mean midnight जो है कि 12 am से जो start हो रही है, so that a period of 24 hour is called the day. So हम किस तरह जो है ये रेफरेंस किस तरह देंगे days को। So reference to time of day means reference to time of day simply mean the standard time। ग्रीन मीन वेज टाइम से जो है जीएमटी से प्लस 5 और अहीर जो टाइम होता है। ग्रीन मीन वेज टाइम जो है ये एक ग्लोबल टाइम है जो कि ऑब्जर्व होती है ऑल ओवर द वर्ल्ड। इससे प्लस 5 और अहीर जो टाइम होगा, सो दैट विल बी कंसिडर्ड एज द स्टैंडर्ड टाइम। इसमें जो है फिर वेस्ट पाकिस्तान शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑर्डिनेंस में इसकी जगह पर जो है पीएसटी लिखा है, पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम, जो कि पाकिस्तान एक ऑप्शन गवर्नमेंट जो है ऑब्जर्व कर रहा है। सो इसमें फिर ये है कि प्रोवाइडेड दैट फॉर एनी एरिया जहाँ पर स्टैंडर्ड टाइम फॉर द टाइम बीइंग जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट ये भी कर सकता है कि इसी किसी भी जगह पर जो है वहाँ पर अपना एक टाइम टाइम जो है लिमिट वो सेट कर सकता है, स्पेसिफाई कर सकता है प्रोविंशियल गवर्नमेंट के वो एरिया कौन सा होगा, फिर उसमें जो है जो टाइम वहाँ पर ऑब्जर्व होगा वो कैसा होगा। एंड देन सच टाइम टू बी ऑब्जर्व जहाँ पर उस फैक्ट्री जहाँ जहाँ उस एरिया में जितनी भी फैक्ट्रीज होगी, तो फिर वहाँ पर वही टाइम जो है ऑब्जर्व होगा। फर्स्ट इंस्टेंस पे पर तो या तो GMT प्लस 5 और आई हीट दैट विल बी ऑब्जर्व। बट अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है किसी एरिया को स्पेसिफाई करे और वहाँ पर जो फैक्ट्रीज है उसके वजह से कोई और टाइम बना रहा है, सो दैट विल बी आल्सो दी वैलिड टाइम। Then the main thing is egg में ये है कि what is the difference between the seasonal factories and non-seasonal factories। क्योंकि इसके हवाले से फिर जो डेली वीकली आवर्स है या ओवर टाइम है ये सीजनल और नॉन सीजनल फैक्ट्रीज के लिए डिफरेंट है। So subsection 1 of the section 4 says that for the purpose of this act any factory जो कि इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व है, किन चीज़ों में, कॉफ़ी इंडिगो, sugar, lake, rubber, groundnuts, cotton ginning, and cotton or cotton jute pressing. So all these are the especially the seasonal factories. At the first instant, these all will be considered as the seasonal factory. So हम आसानी से भी डिस्कस करते हैं कि हम किस तरह चाय बना रहे हैं। So first of all इसमें टी है, टी, शुगर,
the coffee, indigo, leg, and then the rubber, and then the groundnuts, and then जो है the cotton. So all these are actually the seasonal factory. Is a seasonal factory, or any of the aforesaid process is a seasonal factories. Subsection 1 of section 4 में तो ये है. फिर जो है ये बताया गया है provided that the provincial government ऑफिशियल नोटिफिकेशन के जरिए जो है इन द गजट वो ये डिक्लेयर कर सकता है कि कोई भी जगह है जहाँ पर 180 डेज से जो है बिलो काम कर रहे हो किसी जगह पर. Mostly to have mostly we know that there is a 365 days within 1 year. लेकिन अगर किसी जगह पर जो है 180 डेज से कम काम हो रहा है किसी भी जगह पर, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि उसे डिक्लेयर करे. मोस्टली अगर हम देखें तो 180 डेज से कम 180 डेज से कम दिनों के लिए वो काम कर रहे हैं. सो दैट इज डायरेक्टली सीजनल फैक्ट्रीज. लेकिन प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि अगर कोई जगह है जिसमें 180 डेज से पर द ईयर 180 डेज से कम दिनों के लिए काम हो रहा हो, सो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ये डिक्लेयर कर सकती है कि दिस विल बी दी सीजनल फैक्ट्री. इसके अलावा जो है उसके पास ये भी पावर है कि अगर कोई फैक्ट्रीज है उसमें 180 डेज से अबाव का काम हो रहा हो तो वो उसे डिक्लेयर करिए कि ये सीजनल फैक्ट्री नहीं है. और अगर 180 डेज से कम है तो उसे भी डिक्लेयर कर सकती है कि ये सीजनल फैक्ट्रीज है. सबसेक्शन 2 में फिर ये द प्रोविंशियल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन फॉर मोर देन 180 डेज. तो ये एक सिंपल चीज़ है कि अगर कोई फैक्ट्रीज है जिस या कोई जगह है जिसमें 180 डेज से कम दिनों के लिए काम कर रहा हो, प्रोविंशियल सो फर्स्ट इंस्टेंट ये जो है हमारे नज़र में आ रहा है कि दिस इज द सीजनल फैक्ट्री. लेकिन प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफिशियल नोटिफिकेशन के जरिए डिक्लेयर कर सकती है कि दिस इज नॉट द सीजनल फैक्ट्री. सबसेक्शन 2 में फिर ये है कि अगर कोई जगह है जहाँ पर 180 डेज से अबाव काम हो रहा है, सो इन द फर्स्ट इंस्टेंट हमारे ब्रेन में ये आता है कि दिस इज दी नॉन सीजनल फैक्ट्री. लेकिन प्रोविंशियल गवर्नमेंट डिक्लेयर कर सकती है कि दिस इज दी सीजनल फैक्ट्रीज. So this was regarding the section 4. Now let's proceed toward the section 5. So this is regarding the power to apply provision applicable to factories to certain other places. The factories में जो कि certain other places है इस एक के जो different provision है वो individually उस place पर जो है applicable हो सकती है. So now let's proceed toward the section 5. So this is regarding the इसमें फिर ये है कि the provincial government may by notification in the official gazette declare that all or any of the provision of this act will be applicable to such place or the places. So simple mean जहाँ पर funds इसमें simple mean ये है कि provincial government के पास ये power है कि एक फैक्ट्रीज है जिसमें या एक जगह है जहाँ पर वो तो फैक्ट्री है नहीं, क्योंकि फैक्ट्री हम किसे कहते हैं दैट इज जहाँ पर 10 या 10 से ज़्यादा वर्कर काम कर रहे हो फॉर द कंसेक्यूटिव 12 मंथ और वो किसी न किसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हो, वो चाहे पावर यूज़ कर रहा हो या नहीं कर रहा हो. लेकिन इसमें फिर ये है सबसेक्शन 1 ऑफ द सेक्शन 5 में कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है अगर कोई जगह है जहाँ पर 5 या 5 से ज़्यादा वर्कर काम कर रहे हो फॉर दी कंसेक्यूटिव 12 मंथ, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो इस एक्ट के ऑल प्रोविजन या सम ऑफ द प्रोविजन जो है वो एप्लीकेबल कर सकती है उस स्पेसिफाइड जगह पर. फिर जो है सबसेक्शन 2 में ये फर्दर कंटिन्यूएशन में है कि सबसेक्शन 1 के अंडर जो नोटिफिकेशन डिक्लेयर करता है प्रोविंशियल गवर्नमेंट, सो दैट नोटिफिकेशन will be regarding the any place or such different types of the places. लेकिन subsection 3 में फिर ये दिया गया है कि notwithstanding anything contained in class J of section 2 के सेक्शन 2 के क्लास J में जो कि फैक्ट्रीज की डिफिनीशन थी उसमें फिर ये है कि दैट इज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट फैक्ट्रीज के जिसमें 10 या 10 से ज़्यादा वर्कर काम कर रहे हैं फॉर दी फ्रॉम द लास्ट फॉर द कंसेक्यूटिव 12 मंथ, वो किसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हो, वो तो ऑलरेडी फैक्ट्रीज है. लेकिन अगर कोई जगह है जहाँ पर जो है 5 या 5 से ज़्यादा वर्कर काम कर रहे हो, सो प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है किसी एक या ऑल जो प्रोविजन है इस एक्ट की वो एप्लीकेबल कर सकती है इन सच प्लेसेस और वन प्लेस. So this is regarding the section 5. Now let's proceed toward the section 6. So this is regarding the power to declare department to be separated factories. So provincial government के पास ये है कि वो written order के थ्रू जो है फैक्ट्रीज के जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उससे इंडिविजुअली डिक्लेयर कर सकती है कि that will be the separate factories for the purpose of this act.
Then section 7 is regarding the power to exempt and change in the factories. The problem mostly जो है जो आप जब किसी फैक्ट्री में चेंजेस कर रहे हैं, सपोज ऑक्यूपायर चेंज कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आप चेंजेस कर रहे हो, या सपोज देयर इज अ ह्यूज changes within the number of the workers, so आप जो है immediately जो superior inspectors है या जो responsible authority है उसे आप जो इस जेल के बारे में you will inform them. बट अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास ये पावर है, सेक्शन 7 में ये दिया गया है कि वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के जरिए डिक्लेयर कर सकती है कि एक फैक्ट्री से जहाँ पर या एक क्लास ऑफ फैक्ट्रीज है उसे आप जो है ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट एग्जाम कर सकती है कि अगर वो ऑक्यूपायर में चेंजेस करती है या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में या नंबर ऑफ वर्कर में। लेकिन ये तब एप्लीकेबल होगा अगर वहाँ पर 20 से कम वर्कर काम कर रहे हो। फिर इसमें ये है कि प्रोवाइडेड दैट में ये है कि जब वहाँ पर 20 से ज़्यादा वर्कर, जिस दिन भी वर्कर की तादाद 20 से ज़्यादा हो गई, तो फिर वो अगर चेंजेस करती है, वो चाहे ऑक्यूपायर में चेंजेस कर रही हो, जो कि हमने डिस्कस किया है कि एक बंदा जिसका अल्टीमेट कंट्रोल होता है वो द फेयर ऑफ द फैक्ट्री, या मैनेजर जो है वो भी ऑक्यूपायर वो भी कंसिडर कर सकते हैं हम। सो अगर वो फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में या ऑक्यूपायर में या नंबर ऑफ वर्कर में या इवन पावर जो यूज़ हो रही है वहाँ पर, सो उसमें अगर चेंजेस करती है सो वो रिस्पेक्टिव अथॉरिटी को इन्फॉर्म करेगी। लेकिन अगर किसी फैक्ट्री में 20 से कम वर्कर काम कर रहे हो, सो वहाँ पर जो चेंजेस है दैट इज एग्जेम्प्टेड। लेकिन जिस दिन वर्कर की तादाद 20 से अबव हो गई, सो देन द डिफरेंट, so then they will inform the respective authority. So this is regarding the section 7. Now, what is in the section 7A? That is the exemption from certain provision of this act. So इसमें फिर ये है कि the provision of section 14, section 15, subsection 1, class B provisions, इसके अलावा जो section 16, 17, 18, 21, 2, 22 and 23 और section 33 की subsection 3 जो है ये applicable नहीं है किसी भी जगह पर जहाँ पर 19 से कम वर्कर काम कर रहे हो। इसके अलावा फिर ये भी है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है ऑफिशियल गजट में बाय नोटिफिकेशन जो है ये अप्लाई कर सकती है सम ऑफ दीज द प्रोविजन सम ऑफ दीज डिफरेंट सेक्शंस। सिंपल मीन ये है कि अगर किस जगह पर 19 से कम वर्कर काम कर रहे हो, सो इन द फर्स्ट इंस्टेंस वहाँ पर सेक्शन 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23 and 25 after 33 the subsection 3 they will not be applicable at the first instance। लेकिन प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो सम ऑफ दिस द प्रोविजन ऑफ सम ऑफ दिस एक्ट दे कैन अप्लाई टू दैट स्पेसिफाइड एरिया और द फैक्ट्री। फिर सेक्शन 8 में फिर ये है कि पावर टू एग्जेम्प्ट ड्यूरिंग पब्लिक इमरजेंसीज। तो इसका सिंपल मीन ये है कि इन पब्लिक इमरजेंसी प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है ऑपरेटिंग बजट में नोटिफिकेशन के थ्रू जो है एग्जाम कर सकती है एनी और किसी भी फैक्ट्री के ऊपर जो है वो एग्जाम्पशन कर सकती है रिगार्डिंग दी all of the provision or some of the provision of this act। फिर सेक्शन 9 में फिर ये है नोटिस टू इंस्पेक्टर बिफोर कमेंसमेंट ऑफ वर्क। जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया है कि आप जो है अगर चेंजेस कर रहे हैं या इवन काम कर रहे हैं किसी फैक्ट्री में, सो बिफोर दैट you must inform the inspectors or the authority जो कि responsible है for the cognizance of an offense। So before work, जिसमें फिर ये है कि जो इस एक्ट है इसके आने के बाद जो है आप अगर किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हो, सो विद इन कोई सीजनल फैक्ट्रीज है, बिफोर वर्क इज बिगिन इन एनी फैक्ट्री आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, बिफोर सीजनल फैक्ट्रीज या इवन नॉन सीजनल फैक्ट्रीज है, गोपाल जो है वो एक रिटन फॉर्म में इंस्पेक्टर को इन चीज़ों के हवाले से जो है इंफॉर्मेशन देगा रिगार्डिंग द नेम ऑफ द फैक्ट्री एंड इट्स सिचुएशन और द एड्रेस। इसमें जो है फिर नेचर ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कि इसमें जो है कौन सी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करती है, आइदर मेकिंग, अल्टरिंग, ornamenting, पैकिंग और फिनिशिंग और सम अदर थिंग्स वो कर रहा है। इसके अलावा जो है द नेचर एंड अमाउंट ऑफ द पावर जो जहाँ पर वो यूज़ हो रहा है। इसके अलावा द नेम ऑफ द पर्सन जो कि मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री होगा। फिर और जो डिफरेंट पार्टिकुलर्स है जो कि इस एक्ट के पर्पस के लिए डिस्क्राइब की गई है। सो जो फैक्ट्री का ऑक्यूपायर है काम करने से पहले जो इंस्पेक्टर को इन सारी चीज़ों के बारे में लाइक दी नेम एंड एड्रेस, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, नेचर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, nature of an amount of power and the managing staff।
इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। फिर ये है कि एक इंफॉर्मेशन वो कब देगा, in respect of all factories which comes within the scope of this act, कि एक फैक्ट्रीज है जो कि फैक्ट्रीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 1972 से पहले बनाई गई हो, सो वो विद इन 30 डेज जो है इंस्पेक्टर को ये नोटिस देगा। लेकिन अगर कोई फैक्ट्रीज है जो कि सो विद इन 30 डेज दे विल इन्फॉर्म द इंस्पेक्टर। फिर सब सेक्शन 2 में ये है कि अगर आप जो है मैनेजिंग स्टाफ में चेंजेस कर रहे हो, सो विद इन 7 डेज you will inform or take you notice to the inspector। Subsection 3 में फिर ये है कि during any period of which no person, अगर कोई फैक्ट्री है जहाँ पर मैनेजिंग स्टाफ आपने अपॉइंट नहीं किया हो, रिजाइन नहीं किया हो, सो जो आपको फायर होगा दैट विल बी कंसिडर्ड एज द मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री। सो सेक्शन 9 का सिंपल मतलब ये था कि अगर आप किसी फैक्ट्री में काम आपने फैक्ट्री बनाई, फिर वहाँ पर आप काम करना शुरू करते हो, सो बिफोर डूइंग दैट वर्क आप जो है फैक्ट्रीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 1972 से अगर फैक्ट्रीज पहली है, सो आप जो है इंस्पेक्टर को नोटिस दोगे रिगार्डिंग दी नेम एंड एड्रेस ऑफ द फैक्ट्री, द नेचर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, नेचर एंड अमाउंट ऑफ पावर यूज्ड, और वहाँ पर जो मेरे मैनेजर होगा उसके हवाले से। और आप अगर आप मैनेजर की जो पोजीशन है उस पर आप चेंजेस कर रहे हो, सो विद इन 7 डेज यू विल इन्फॉर्म द इंस्पेक्टर। और इस तरह अगर कोई फैक्ट्री है जहाँ पर जो है मैनेजर आपने अभी तक अपॉइंट नहीं किया हो, सो जो ऑक्यूपायर होगा दैट विल बी कंसिडर्ड एज द मैनेजिंग स्टाफ। Now let's proceed toward the chapter 2, that is the inspecting staff। So उसमें फिर ये है कि regarding the section 10 inspectors, कि provincial government जो है by notification in official gazette जो एक स्पेसिफाइड बंदा होगा जो कि फिट होगा वो फॉर द स्पेसिफाइड एरिया अपॉइंट कर सकता है कि इंस्पेक्टर होगा वहाँ पर। इस तरह जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है चीफ इंस्पेक्टर अपॉइंट कर सकता है जो कि पूरे प्रोविंस के लिए होगा। सब सेक्शन 3 में फिर ये है कि जो इंस्पेक्टर और जो चीफ इंस्पेक्टर है जो कि अपॉइंट किए गए हो आपने सब सेक्शन 1 एंड सब सेक्शन 2 में, उसका जो है किसी बिजनेस और फैक्ट्रीज एक्सेट्रा में इंटरेस्ट नहीं होगा। सब सेक्शन 4 में ये है कि उस डिस्ट्रिक्ट का जो मजिस्ट्रेट है दैट विल बी आल्सो द इंस्पेक्टर फॉर दैट डिस्ट्रिक्ट। सब सेक्शन 5 में फिर ये है कि द प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है किसी जगह के लिए एडिशनल इंस्पेक्टर भी अपॉइंट कर सकता है फॉर सच लोकल लिमिट। सेक्शन 6 में फिर ये दिया गया है कि जहाँ पर वन एक से ज़्यादा इंस्पेक्टर हो, सो प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है फिर इंडिविजुअली हर इंस्पेक्टर के लिए उसकी जो पावर है और कौन सा एरिया इसके अंडर आता हो, सो वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है उसे डिक्लेयर कर सकती है। सब सेक्शन 7 में फिर ये है कि चीफ इंस्पेक्टर एंड इंस्पेक्टर ये पाकिस्तान पेनल कोड जो है उसके अंडर उसकी बिकॉज ऑफ पाकिस्तान पेनल कोड they will be deemed as the officially subordinate to the provincial government। तो सिंपल था जो चैप्टर 2 है इंस्पेक्टिंग स्टाफ। इसमें फिर ये है कि अगर कोई फैक्ट्री है वहाँ पर जब इस एक्ट की प्रॉपर्ली ये एप्लीकेबल है या नहीं है, सो ये कौन देगा, दे विल बी ऑब्जर्व बाय द इंस्पेक्टर्स। सो हमें पहले इंस्पेक्टर को अपॉइंट करना पड़ेगा। सो सिंपल अगर मैं ओवरव्यू ले लूँ सेक्शन 10 का, तो ये तो पहला ये है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट एक चीफ इंस्पेक्टर अपॉइंट करेगा जो कि पूरे प्रोविंस के लिए होगा। फिर इंस्पेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं लोकल एरिया के लिए, इवन एडिशनल इंस्पेक्टर भी अपॉइंट कर सकता है। फिर ये है कि अगर एक जगह में ज़्यादा से वन से ज़्यादा इंस्पेक्टर हो तो फिर उसकी हर इंस्पेक्टर के अंडर जो एरिया आएगा या उसकी जो पावर होगी वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट डिक्लेयर कर सकती है। इसके अलावा ये है कि जितने भी बंदे हम हायर कर रहे हैं जो कि इंस्पेक्टर और चीफ इंस्पेक्टर है, इसका किसी भी बिजनेस फैक्ट्रीज एक्सेट्रा में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। फिर लास्ट में ये है कि चीफ इंस्पेक्टर एंड इंस्पेक्टर आर द सबऑर्डिनेट टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड दे विल रिपोर्ट टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। फिर सेक्शन 11 में ये पावर ऑफ इंस्पेक्टर की, इंस्पेक्टर की पावर क्या है। सो प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है एन इंस्पेक्टर की पावर सच लोकल एरियाज के लिए रूल्स बना सकती है कि वहाँ पर जो इंस्पेक्टर की पावर क्या होगी। लेकिन इंस्पेक्टर की मोस्ट पावर ये होती है कि वो किसी भी जगह पर एंटर कर सकता है ऑन सच विद सच असिस्टेंस, मीन के कोई भी जो अथॉरिटी है, पब्लिक अथॉरिटी है या कोई और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ वो जो है वो किसी भी जगह पर एंटर कर सकता है और इस एक्ट के जो डिफरेंट प्रोविजन है उसे ऑब्जर्व कर सकता है। इवन जो है वो किसी भी रजिस्टर्स और जो प्लांट्स है या प्रेमिसेस है उसकी एग्जामिनेशन इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। इसके अलावा जो है वो फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ दिस
एक्ट, वो किसी भी जगह पर जो है जो भी चीज़ नेसेसरी है वो भी कर सकता है कि प्रॉपर्ली आए ये एक्ट एप्लीकेबल है या नहीं है। फिर सब सेक्शन 12 में ये है कि सर्टिफाइंग सर्जन हमें अपॉइंट करने पड़ेंगे जो कि फैक्ट्री में जो वर्कर काम कर रहे हैं कि आया वो मेडिकली फिट है काम के लिए या नहीं है। तो इसमें ये है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है एक बंदे को जो है जो कि एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होगा वो अपॉइंट कर सकता है एज ए सर्टिफाइंग सर्जन एक स्पेसिफाइड एरिया के लिए, जिस तरह हमने इंस्पेक्टर अपॉइंट किए थे। तो इस तरह प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, फिर इसमें यहाँ एक्सप्लेनेशन में किया गया है कि वो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है आइदर या वो तो सेंट्रल लेजिस्लेचर या प्रोविंशियल जो लेजिस्लेचर है उसमें जो उसका नाम होगा। मीन ये बंदा जो है जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है, अगर हम पाकिस्तान के एक्सपेंस से बात करें तो वो जो मेडिकल एंड डेंटल ऑर्डिनेंस 1962 के अंडर जो है वो रजिस्टर होगा आइदर प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में या सेंट्रल लेजिस्लेचर में। सो गवर्नमेंट जो है उसे अपॉइंट कर सकता है एज अ सर्टिफाइंग सर्जन फॉर द स्पेसिफाइड एरियाज। फिर जो सर्टिफाइंग सर्जन है ये जो ये पावर उसके पास है कि वो सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस दे सकता है एम्प्लॉयमेंट को या एम्प्लॉय को, और दैट सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस विल बी वैलिड फॉर द 3 मंथ। और ये जो एग्जामिनेशन करेगा वो सर्टिफाइंग सर्जन वो खुद करेगा। सो दिस वाज रिगार्डिंग द फ्रॉम सेक्शन 1 to 12. In the next video tutorial I will discuss and start from this section 3 that is regarding the health and safety. So till that, thank you all for your time and stay blessed.